So we are going to study spin. एक हो गया वन इज द क्लासिकल स्पिन. क्लासिकल स्पिन पढ़ा है ना आपने. क्लासिकल स्पिन द वे यू स्टडी इन क्लासिकल मैकेनिक्स. But here we have to study spin in the context of quantum mechanics. ठीक है. So classically as a quantity can take any value, है ना. But in quantum mechanics we restrict the value of things, जिसको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज भी कहते हैं. And once an operator acts on a given state psi, so it's going to restrict it to a particular eigenvalue. Once you translate the same in the language of quantum mechanics, that any quantum mechanical particle will not take any given value, eigenvalue. Okay? It will not take any value. It will take some range of values, discrete values, जो भी हम कहते हैं, which are modulated by a factor of elementary x to quantum h. अब ये है कि since we are going to study spin, so we just follow this book by Mersbacher. इसका चैप्टर 16 and maybe we'll just go to chapter 16, 21. So we'll just first chapter 16 more or less deals with this topic, spin. So before coming to what actually spin is in the quantum mechanical sense, the quantum mechanical aspects of the spin, so we'll try to realize spin how can feel. लैब में कैसे spin को feel करते हैं, क्योंकि we have been assumed, हमारा जो classical intuition है, it's what I should say, it has been nurtured on a classical intuition. हमने particles को आंखों से देखते हैं, यहाँ से गया, है ना. So it will have you can take any value, you know it continuously, it has gone from there to there. But once we are in quantum mechanics, we say things jump, है ना. A particle can have जो energy states का, energy eigen states का जो transition है, it is not continuous. It's from state A to state B. ठीक है, that we define. So that's a quantum intuition. अब वो quantum intuition को हम how we can measure it in terms of some experimentation, such that if we will have an intrinsic angular momentum. So we'll take an analogy, this book, or you might have studied polarization of. So normally हम कहते हैं polarization of waves, light waves in general. ठीक है. Here we'll take polarization of psi waves. So we have an intuition कि कोई भी light है, it can be partially polarized, fully polarized, it can be opaque, transparent, है ना. So whether the plane of polarization of light जो incoming light को obstruct करता है, enhance करता है, partially enhance से partially retard करता है. So depends. So वहाँ पर हमारा था ना I is equal to I naught square cos square, ऐसा कुछ not ना Moll's law and something like that. अब यहाँ पर मसला हमारे पास आ रहा है कि once for example an electron, कोई भी magnetic field है ना, कोई भी inhomogeneous magnetic field है. Inhomogeneous means अगर homogeneous होगा तो things will constantly increase or constantly decrease, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा for observer. If it's only inhomogeneous means there will be suddenly some pressure gradient जिसकी वजह से कोई fluctuation आएगी.
which we can later measure as an experimental, as an experimentalist who is measuring things. जैसे आप लैब में करते हैं ना, वो मिली ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कोई भी टेलीस्कोप से आप देखेंगे, सो वहाँ बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड को इनहोमोजेनियसली चेंज करेंगे फील्ड को, सो यू कैन ऑब्जर्व समथिंग. व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व? अगर इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड कोई भी ये है कि जो यहाँ पर जो इंप्रेशंस हमारे पास प्लेट पे आएंगे, सो इट विल नॉट बी कंटिन्यूस इंप्रेशन. आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस आएगा, बट एट सम रिपीटेड दिस थिंग इंटरवल्स. ठीक है. सो इसका मानी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एज ए क्वांटिटी है विच इज बीइंग, उसका सिग्नेचर जो हमारे पास प्लेट पे आ रहा है, इट डजंट टेक एनी वैल्यू. इसका वैल्यू कोई प्लस आ रहा है या which will correspond to basically up states or डाउन स्टेट्स. ठीक है. स्पिन अप और स्पिन डाउन जिसको हम कहते हैं. आप जो ये स्पिन अप एंड स्पिन डाउन है, सो इट कैन बी लाइक दिस, प्लस 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 या प्लस माइनस प्लस. ठीक है. सो वट एवर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसी को हम फिजिक्स की इस एक्सपेरिमेंट को फेमसली विच इज डन समथिंग कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन. सुना है? और जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हमारे पास है फिजिक्स में, द पर्सन्स पीपल हु हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, उसी को हम कहते हैं स्टर्न गेलराज एक्सपेरिमेंट. और उसी की मोर जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, द एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन डन बाय गोल्डस्मिथ एंड ओल्डेनबर्ग, ऐसा कुछ नाम इनका है ना. मे इट वाज डन इन 1930s. ये एक्सपेरिमेंट इट वाज डन इन दोज टाइम्स. अब बेसिकली व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? द एक्सपेरिमेंट इज दैट इन एन इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी आप चार्ज पार्टिकल है, अमोनिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जो भी है, तो उसकी जो पोलराइजेशन है, it will not be anything. It will have some discrete impressions on the screen, and which are modulated by some factor. That factor is basically, so before how they are modulated, I'll say, जो for example अगर inhomogeneous magnetic field में कोई भी in presence of force, it will be del into mu dot b, जो मैंने कहा था, gradient of how the magnetic field changes in presence of force. जो in presence of field, कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवर्स कर रहा है, what's the force which is being impressed upon, जिसकी वजह से we are observing those traces which corresponded to those up or down states. अब जो यहाँ पर म्यू है ना, म्यू हमारे पास, म्यू का वैल्यू हमारे पास आता है -e by 2mec by L. ठीक है. इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं. तो L इज द एंगुलर मोमेंटम. अब नॉर्मली हम जब कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मूव्स अराउंड, एक तो हो गया नॉर्मली इट मूव्स, दूसरा हम कहते हैं इट आल्सो हैज इट्स ओन इंट्रिंसिक स्पिन, कि नहीं, मतलब एक तो इट प्रोसेसेस अलोंग इट्स ओन एक्सिस ऐसे, एंड जिस तरह अर्थ मूव कर रहा है अलोंग सन, इस साइमल्टेनियसली इसका अपना एक स्पिन होता है, एंड साइमल्टेनियसली इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब जो ये प्रिसिशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस, फॉर एग्जांपल फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, हम जो करते हैं इन एक्सरसाइज इन इलेक्ट्रिक लाइंस, वहां क्या करते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्यू टू if a current passes through a charged
इट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। मगर वो करंट कैसे पास होती है? द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मगर यहां हम डीपर बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहां से वहां, उनका भी अपना एक इंट्रिंसिक स्पिन होता है, irrespective of the fact whether the charges are moving or not। ये बात समझ आई? उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्पिन, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। One is that you are saying that magnetic field is measured ultimately जो एम्पियर्स लॉ में, बिकॉज जहां भी करंट मूव करती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड उसकी वजह से यू आर ऑब्जर्विंग सम फ्लक्चुएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। The other is there is some intrinsic property which is associated with the charged particle, जिसको हम कहते हैं intrinsic magnetic moment, intrinsic angular moment। अब जो रियल में आएगा हमारे पास total angular momentum, it will be that intrinsic angular momentum and total angular momentum, it should come out to be some constant। ठीक है। And experimentally we have a parameter for that। If for example, if L is the orbital angular momentum and mu is a classical relation, and जो आप पढ़ते आए हैं लारमोर्स, आपने पढ़ा है लारमोर्स प्रिसिशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में 2l+1। So if they were not, you can just go and see any book of modern physics, Bizer की book, ठीक है, you can see the description। So जिस तरह आप निकालते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी तरह जो इसके मैग्नेटिक ये है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रिसिशन के वैल्यूज क्या आएंगे? दे विल कम इन द 2l+1 distinct eigen values। In quantum mechanics, normally we talk of eigenstates। Eigenstates are operated upon by operators। Those operators give distinct eigenvalues। Two or more eigenstates can have unique eigenvalue, which are orthogonal states। ठीक है। If they are not orthogonal, there is a procedure for non-orthogonal state to make a corresponding unique eigenvalue, and this is a way how we can arrive at an eigenvalue equation, which how we solve it। ठीक है। तो before coming to the quantum mechanical way of eigenvalues, हम classically जो magnetic field में this Larmor's way, there are these distinct eigenvalues depending upon the value of L। That's it। So mu is a fixed direction, and it possesses these eigenvalues। तो -l+1, ऐसे l-1, l है ना, ऐसे from both, यहाँ से भी -l+1, -l+2, from left hand side में भी, right hand side में भी, for continuously increasing and continuously decreasing orders। इस तरह आप करते हैं ना both sides of the axis, इस साइड में भी और इस साइड में भी, you can have those values। and जो ये है ना, this constant, it's known as B0, it's known as Bohr's magneton। तो इसका वैल्यू आता है experimentally, if you just substitute, its value comes out to be 9.2 into 10⁻24 joule per Tesla, या अर्थ पर गॉस भी जो भी आएगा हमारे पास। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू बी आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास आएगा म्यू बी, इट विल बी प्लस एज वेल एज माइनस।
सो इसके अब दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगे, ठीक है। सो फॉर डिफरेंट दीज स्टेट्स, फॉर ए गिवन स्टेट इसके 12 + 1 इट विल हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। सो द वैल्यू विल बी EH/2 - MEC। आप जो ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था ना इसने स्टर्न एंड गेर्लक, इट वाज सॉर्ट ऑफ क्लासिकल सेटिंग, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो आता है ना इंप्रेशंस ऑन द स्क्रीन, यहां पर जिस तरह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये ब्राइट स्पॉट आता है, ये डार्क स्पॉट आता है, ब्राइट डार्क डार्क। सो इन द सेम वे व्हेन वी गो फॉर क्लासिकल डिस्क्रिप्शन टू क्वांटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इफ यू डोंट टेक इलेक्ट्रॉन एज ए वेव और इफ यू डोंट टेक इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, ठीक है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में अगर, तो जो इंप्रेशन हमारे पास आएगा यहां पर, इट्स नॉट दैट डिस्टिंक्ट द वे इट्स इन क्लासिकल वे, द वे इफ यू ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज ए क्लास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव भी नहीं है पूरी, ना पूरा पार्टिकल है। अगर पूरा वेव भी नहीं है तो जो इंप्रेशन हमारे पास आया था यहां पर, ठीक, सो इट विल बी नॉट बी दैट डिस्टिंक्ट द वे वी स्टडी यंगस्टन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव ड्युअलिटी। हमारे पास है ना वो बोहर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, इफ यू कंसंट्रेट ऑन वेव एस्पेक्ट द पार्टिकल एस्पेक्ट बिकम्स imprecise। if we in a given experiment हम कोई भी so कहने का मतलब है कि it will not be that distinct। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट हमारे पास अप एंड डाउन स्पिन्स आ रहे थे एक्सपेरिमेंट्स, तो वो जो हमारे इंप्रेशंस है ना वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, उसमें कोई देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, एंड दैट डिस्क्रिपेंसी हैज बीन एड्रेस्ड बाय these people taking electrons or particles not entirely as particles but as wave particles as has been described, and that discrepancy has been expressed in some another experiment where this है, ये इसकी दो projections हैं taking quantum mechanical things into consideration। For example, they measured the dipole moment of electron, muon, लैब में जब मेजर करते हैं ना, फिर स्क्रीन पे देखते हैं इसका इंप्रेशन क्या आएगा, फिर उसकी एक्यूरेसी मेजर करेंगे, देन यू कैन मेजर कंपेयर वन एक्सपेरिमेंट विद अनदर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक और चीज है, फॉर एग्जांपल सिंस ये तो एक इंप्रूवमेंट है, द अदर इंप्रूवमेंट है इवन इन क्वांटम मैकेनिक्स समथिंग कॉल्ड लैंड जी फैक्टर, सुना है? लैंड जी फैक्टर सुना है? So there can be further once we do some experimentations, एक होती है ना फाइन, एक होता है स्पेक्ट्रल लाइंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फिर आप करते हैं ना फाइन ग्रेन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फाइनर लाइंस आती हैं, फिर सो यू से दैट जिस तरह आप लैंडो लेवल्स सुना है, लैंडो लेवल्स, चलो इफ नहीं सुना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखना पड़ेगा, लैंडो लेवल्स। एक हो गया नॉर्मल लेवल्स, उसमें फिर डिस्क्रीट में भी डिस्क्रीट आ जाता है। सो इन द सेम वे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एक हो गया कि उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस विल गो इन कमिंग चैप्टर्स, कमिंग क्लासेस, जो इसका एक्सपेरिमेंटेशन जो है, ठीक है, हाउ इसका इंप्रेशन स्क्रीन पे कैसे आता है, इमल्शन स्क्रीन पे, ठीक है, अगर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है या इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है,
इफ इट्स ड्यू टू सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वट एवर प्रॉपर्टी, उसको इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका इंप्रेशन स्क्रीन पे हमको कैसे दिखेगा। एक हमारे पास स्टर्न गेलराक एक्सपेरिमेंट है, सो इट्स इसमें आते हैं दो वैल्यूज, बट सॉर्ट ऑफ इट्स ए क्लासिकलिटी है। इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है ये वाला एक्सपेरिमेंट, वी टेक दिस थिंग। इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसमें फिर वो लैंड जी फैक्टर वी कैन टेक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इनटू कंसीडरेशन व्हिच विल नॉट, सो दैट बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू जो है ना ये थोड़ा सा मोर इम्प्रूव होता है इसके बाद। अब इसमें ये है कि नॉर्मली अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल if we are going to see polarization of कोई भी वहां से बीम आ रहा है, ठीक है, बीम अगर वहां से आ रहा है and we are going to see its signature screen, तो we are going to take analogy of कोई भी polarized particle आ रहा है, even though that's a classical analogy, ठीक है। बिकॉज हम क्या कहते हैं, एक हो गया you are going to study quantum mechanics directly and taking classical mechanics as a limited case of it। दूसरा होता है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई उसका एनालॉगस एक्सपेरिमेंट लेंगे, हाँ, यू आर गोइंग टू टेक एन एनालॉगस एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ट्राई टू कंपेयर इट विद द क्वांटम मैकेनिकल थिंग, ठीक है, एंड सी द डेविएशंस, सी द, तो जो हमारे पास पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट है विच वी आर डूइंग, वहां से बीम आ रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू पोलराइज। पोलराइजेशन में क्या मेनली मकसद है शाबाश, इफ यू रिमेंबर पोलराइजेशन में है ना, नॉर्मली पोलराइजर जो होता है इसमें एनालाइजर होता है जो लैब में करते हैं, तो जो उसकी जो ओरिएंटेशन है इट विल हैव इसकी ओरिएंटेशन पे वेदर इट विल अलाउ इट और whether it will allow that beam or not. But it's like we are assuming that light behaves as a wave. Just see, light behaves as a wave. तो हम वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइट, बट यहाँ हम we are not saying that light is a wave, neither we are saying light is a particle। अगर पार्टिकल है तो we can explain reflection। we are saying that light or any इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यून जो भी है, इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, सो इधर इज नीदर वेव, इट्स नीदर पार्टिकल। सो जो पोलराइजेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो एंड दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट टोटली रिजेक्ट इट, नीदर कैन वी टोटली एक्सेप्ट इट, है ना, क्यों, उसे इलेक्ट्रॉन और कोई भी है जो नेचर अल्टीमेटली नीदर इट्स वेव, नीदर इसका डीलोकलाइज्ड कैरेक्टर है, नीदर इसका, उसे हम कोई भी चार्ज पार्टिकल का इसका वेव पैकेट्स होते हैं, है ना, वेव पैकेट्स, जहां प्रोबेबिलिटी स्प्रेड मैक्सिमम होता है, उसे इट्स द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज सपोज्ड टू बी देयर, तो नहीं, यही पढ़ा है ना आपने। सो इन दैट कंटेक्स्ट यू हैव टू आल्सो विजुअलाइज the experiment of polarization, and in that context you have to also visualize spin को हम कैसे we are trying to appreciate it in the sense, for example अगर हमारे पास जैसे आप स्कैटरिंग पढ़ते हैं ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कैटरिंग है, एक तो स्कैटरिंग एंगल है, दूसरा होता है इट मे नॉट डिपेंड अपॉन स्कैटरिंग एंगल ओनली, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन on the azimuthal angle। So intensity of कोई भी बीम हम लेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे है इंटेंसिटी, आई लाइट आएगी ऐसे, तो इसमें अगर जैसे लेफ्ट पोलराइजेशन है, राइट पोलराइजेशन, theta 2, theta 1, this is
सो क्वेश्चन इज, जैसे कोई भी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजिंग लाइट आ गई, इट विल स्कैटर इन दिस डायरेक्शन और इट विल स्कैटर, तो अगर इस डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, सो दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज ऑल्सो I1, दिस इज I रखो, ये इंसिडेंट राइट होगा, ये रिफ्लेक्ट कर कह सकते हैं, या द डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे व्हाट आई शुड से, we normally say if some quantity, if a quantity translates, it may translate as a scalar or as a vector. Scalar means you simply add a number, है ना, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप जब प्रॉपर्टीज मेजर करते हो ना, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपरेटर के साथ अगर आप स्केलर करो फिर राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑपरेटर पे, एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट साइड, ठीक है। दूसरा होगा वेक्टोरियल प्रॉपर्टी ऑफ, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ स्टडी करो इन क्वांटम मैकेनिक्स, इधर ए क्वांटिटी विल ट्रांसलेट एज या तो स्केलर या वेक्टर, वेक्टर मींस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिफोर समथिंग हैपेंस एंड आफ्टर समथिंग हैपेंस। बिफोर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया किसी पोलराइजेशन में, ऐसे एक डायरेक्शन में गया, दूसरी डायरेक्शन में गया, ठीक है। मगर अगर एक डायरेक्शन में एग्जैक्टली गया, वो तो एक्स में था, तो इसका पोलराइजेशन वाई में होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के भी साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि दिस सेंटेंस विल समराइज इट, will summarize what I want to say for this quantum mechanical property of spin, which is also called intrinsic angular momentum. Without saying how, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना दिमाग में, ठीक है, so we need, so I'm just communicating you result. तो इससे बेटर है कि you just read the book once twice, और एक्सपेरिमेंट में the result is suggest that wave must be represented by a wave function which under spatial rotations transforms neither as scalar nor as vector, but in a more complicated way. ठीक है, राइट स्टॉप। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है suggest that wave must be represented by a wave function, quantum mechanical wave जो है ना, it doesn't translate as a classical wave, but क्या कह रहा है, which under spatial rotations means अब ऐसे यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, that neither translates as scalar, क्योंकि if you multiply scalar by number तो उससे ज्यादा only magnitude चेंज हो जाएगा, या वेक्टर से करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो ये कहता है नीदर स्केलर बट इन अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वे। कॉम्प्लिकेटेड वे मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
So there is some intrinsic idea of in quantum mechanics we say a particle is neither a wave, quantum mechanical particle is neither wave in the classical sense. Wave का क्या ये है? It is delocalized. ये एक जगह नहीं होती, disturbance travels. Particle क्या होता है? Localized means something fixed. So it has both these properties are somewhat embedded in it. So that's why जो हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पर जो अगर वेव लेते हैं, so we would have got a distinct impression if quantum mechanical particles was only wave. तो अगर ये only particle होता, ठीक है, ये ना स्क्रीन पे अगर quantum mechanical particle यहाँ से ये इंटरफेयर करते हैं ना यहाँ पर, so there is a separate thought experiment. So the point is that even in case of spin as a property, it's not translated exactly in the classical sense. तो उसका जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ये आ रहा था कि that's why we went from Stern-Gerlach experiment to Uhl-Goldschmidt experiment to the other experiments. इसमें increasing values of accuracy आते हैं. About the same idea. ठीक है? Stop.